Very good morning, dear students. Students, today we are taking the topic that is the function and their graph. So here today in this chapter or in video you learn how we can define different type of the function, and also we see the graph of the function, and we learn the different functions, domain and range. So let's see how we can define function and their graph. So first of all we see one more definition here. I have already written on the blackboard. A function which has either R or subset of R and its range. So dear students, we have defined a function f from a to b. This is the symbolical language we are using for a function. तो फंक्शन के अंदर आपको दो चीजें याद रखनी है. We call A as a domain. All the elements which are attached to the element of B, and range will lie in the set B. B के अंदर जो एलिमेंट A से जुड़े हुए हैं, that we called range. जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन दी थी, आपको वो डेफिनेशन अच्छी तरह से याद रखनी है. तो डोमेन आपका सेट A में होता है और रेंज B में. ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं कि a function which has either R मतलब रियल नंबर और सबसेट ऑफ R, या रियल नंबर का सबसेट है. जैसे रियल नंबर के सबसेट आपको पता ही है, रेशनल है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, होल नंबर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट. सो इफ एनी फंक्शन हैज इट्स रेंज, जो आपके रेंज आ रही फंक्शन की, यानी ये वैल्यू b की जो अंदर जो एलिमेंट अंदर है दैट आर द रियल और सबसेट ऑफ रियल, देन द फंक्शन इज नोन एज रियल वैल्यूड फंक्शन. दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन? अ फंक्शन whose range is a real or it is a subset of a real. ठीक है. एक फंक्शन रियल कब कहलाएगा या रियल वैल्यूड फंक्शन कब कहलाएगा? जब उसकी रेंज है, दैट शुड बी रियल और सबसेट ऑफ रियल. फर्दर वी आल्सो कॉल इफ इट्स डोमेन इज आल्सो रियल और सबसेट ऑफ रियल. और अगर डोमेन भी रियल है या सबसेट ऑफ ए रियल, देन वी कॉल फंक्शन एज ए रियल फंक्शन. रियल फंक्शन क्या होगा? when both are real, means both means domain as well as range, both are real number or subset of a real, the function is called a real function. And real valued function, only range is a real or subset of a real. So this is the definition regarding the real. Now we take one more example here. Example 12 says that n be the set of natural number. We are given that n be the set of natural number. In real number, this is also defined a real valued function. We have defined a real valued function. Means image is also real valued function. That's why image is also real. Now function f defined from n to n. Means domain and codomain both are natural number, n to n. F such that defined from n to n by fx equal to 2x plus 1. So what is the function? Fx equal to 2x plus 1.
यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल। अब आपको टेबल दे रखी है वो कंप्लीट करना है। वैल्यूज ऑफ x एंड corresponding वैल्यूज ऑफ fx इज टू बी फाइंड। सो वेरी इजी। जैसा कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल में किया, ये भी एक पॉलिनोमियल है। px इक्वल टू 2x प्लस 1, लाइक फंक्शन इज f ऑफ x। अब सिंबल हम f यूज कर रहे हैं, f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस। तो यहाँ जो भी आप x निकालोगे वो लीनियर पॉलिनोमियल सॉल्व होता जाएगा और आंसर आता जाएगा। सो x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and 7 these values of x. So corresponding values of y is this function. So very easily you can calculate. Here put x equal to 1, यहाँ x equal to 1 put करेंगे तो 2 into 1 plus 1 that is 3, so y is 3, then x equal to 1, y is 3. So that is the one value of f1, that is 3. Now when you put x equal to 2, then f of 2, value of the function f2, that is 5. ठीक है ना, x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे यहाँ पर, then we get f2. x equal to 3, when you take x equal to 3, f3 2 into 3 plus 1 and 6 plus 1 equal to 7. तो ये 7 आ जाएगा। Similarly you can put 4 5 6 and 7. तो x equal to 4 रखिए, 9 5 11 6 13 7 15. So these are tables you have to complete it. So this is very easy example given for understanding the meaning of the function as a linear polynomial. Now some function and their graph. Now we see different type of the function. Here we can see different function and their graph. So that is also very important. We call name wise the function. Like first one is called as a identity function. So what is the meaning of identity function? How it can be defined and what is the graph of the identity function? That is important. So see here, identity function. As name itself, identity function. So you may define let R be a set of real number. Let R be the set of real number and f define a real valued function and define a real valued function. So this is the general symbolically for writing the definition of a function. So f defined from R to R, the function f defined from R to R by fx equal to x और y equal to आप लिख सकते हो y equal to fx equal to x for each x belongs to R. Such function is called the identity function. So such function is called identity function. तो identity function की आपको definition ये देनी है. What is the identity function? We can let R be the set of real number. This R we have that is a real number and define a real valued function.
we have defined a real valued function means its range should be also real. F such that r to r by y equal to x. अगर ऐसा होता है जो भी x की वैल्यू लोगे that is also value of y. So such type of function is called as a identity function. Clear? Hence the domain and range. अब इसकी डोमेन और रेंज निकालना चाहे हम. Hence the domain and range of fx यानी identity function both are real. Now if you want to draw the graph of the identity function, this is the x-axis, y-axis, minus x, minus. Now our function is y equal to fx equal to x. Yani y equal to x. Whatever you are taking x, that is also y. जो भी x की वैल्यू होगी वही y की भी होगी. Suppose you are taking x as 0, then y is also x is 1, then y is also 1. X is 2, y is 2. X 2, y 2. X 3, y 2. And so on. So if you join these 2 points, we get a straight line. Similarly, if you are taking negative point -1, -2, means x -1, then y is also -1. X -2, y is -2. X -3. So in this way, this can be extended indefinitely on both the sides. Graph is extended indefinitely on both the sides. Correct? Yes. सर मेरी अटेंडेंस नहीं लगी. हाँ लगा नहीं. Start हो जाएगा. Now see here, what we are saying, the graph of the identity function is a straight line. ये इसका ग्राफ कैसा है? एक स्ट्रेट लाइन है which is passing through first and third quadrant. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये क्लियर. So here say, so this passes through the origin also. Graph passes through origin. तो किसी भी फंक्शन में आपको 3 चीजें याद रखनी. When you are describing a function or defining a function or writing the type of the function, you have to see what is the domain of the function, what is the range of the function and what is the graph. 3 चीजें आपको याद रखनी और डेफिनेशन तो आपके यही. तो यहाँ पर हमने कहा y इक्वल टू x आपका आइडेंटिटी फंक्शन यानी, और x हम क्या ले रहे हैं? रियल नंबर. तो जो भी x होगा दैट इज द डोमेन. x जो होगा वो डोमेन. तो x हमारा क्या? रियल नंबर. सो दैट्स व्हाई डोमेन इज आल्सो रियल. और यहाँ फंक्शन क्या करा? y इक्वल टू x. और y क्या कहलाता है? रेंज. y यानी रेंज, x यानी डोमेन. ये हमेशा याद रखो, बिकॉज x फ्रॉम द this set, y from this. So y means range. So if x is a real, then y equal to x. So y is also x. It means we are saying here that domain and range of fx are real. तो दो चीजें ये याद रखनी. और तीसरी इसकी ग्राफ. आप ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ किस तरह का है ये आपको लिख देना. This graph is passing through the origin. Now we take constant function. Second function is known as a constant. Constant function defined as, same you can say R is a set of real number and define a real valued function as from R to R by. अब यहाँ से ये हो जाएगा इसलिए constant. तो constant का आपने पहले भी पढ़ा होगा y equal to
C. For each x belongs to R. Here domain of the function is a real. अब इसका डोमेन देखिए, डोमेन मतलब x, x क्या डिफाइन है रियल है, तो ये द डोमेन ऑफ fx is real and अब इसकी रेंज कांस्टेंट है, राइट, y इक्वल टू c, सो रेंज इज ए कांस्टेंट c. अब जैसे हम फंक्शन कैसे लेंगे, देखिए कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है जैसे हमने ले लिया y इक्वल टू c और y इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, x की वैल्यू है वो कांस्टेंट है. अब यहाँ आप x कुछ भी पुट करो फंक्शन में, द c डज नॉट चेंज, या ये जो हमारा फंक्शन आ गया y इक्वल टू fx इक्वल टू 2. नाउ इफ यू पुट एनी वैल्यू ऑफ x हियर, द y इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. तो देखिए जैसे मैंने ये x हो गया, ये y, अब x की वैल्यू में 0 ले लेता हूं, f ऑफ 0, तो 2 into कुछ भी नहीं, x सही नहीं आता. अगर आपने x 0 लिया तो भी y 2 रहेगा, x 1 लिया तो भी y 2 रहेगा, x 3 लिया तो भी y 2, x minus 1 then also 2, x minus 2 then also 2. Means for each point of the x, the value of y is a constant. That's why this function is called as a constant function. Clear? So for constant function, what we give the definition? That domain of the constant function is real. डोमेन आप कोई भी ले सकते हैं, डोमेन का मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 2 3 और -1, दैट्स व्हाई रियल. वैल्यू ऑफ y, that is only 2, which is constant, so we can constant. We are taking this example y equal to 2. So domain here, real, range to and this graph. Now you can say this graph is parallel to x-axis. Clear? This graph is parallel to x-axis. Next we see third, that is the polynomial function. अब हम polynomial function की बात करते हैं. तो polynomial आपने 10th में बहुत सारा पढ़ा है, different type of the polynomial, तो वो सब फंक्शन में आ जाएगा. So how we can define a polynomial function f such that defined from R to R, when R is a real number, is said to be polynomial function, is said to be a polynomial function. इसको हम polynomial function कब करेंगे? if fx or px equal to, if for each x belongs R, means x जो दे रहे हैं that is a real number, in R y equal to, now we write general form of a polynomial, that is a0 a1x a2x square plus last an x power. So in lower classes you have already seen different type of a polynomial. जैसे constant polynomial आपने दिया था, जैसे px equal to 2 ले लिया, so a0 means like constant, or we have a linear polynomial 2 plus x, a0 plus a1x,
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x square plus 2x plus 1 whose power is 2 and so cubic quadratic and so। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो गए जिसकी पावर n है। हमने यहाँ n पावर का एक जनरल पॉलिनोमियल ले लिया जिस n में भी 1 0 2 3 4 5 up to 100,000 or any power of the real number where n is a non negative integer, where n is non-negative integer and a1 a0 all are real number। ये सब real number है a0 a1 a2 a3। so this is the definition for a polynomial function। तो ये जनरल एक पूरी पॉलिनोमियल की क्लास है, ठीक है ना। हमने एक जनरल डेफिनेशन दे दी है फॉर ऑल पॉलिनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है। जैसे आपका लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल दैट विल गिव्स यू ग्राफ एज ए स्ट्रेट लाइन। जैसे आप लीनियर पॉलिनोमियल को ले लो कि ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए, सो दैट विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया है। और क्वाड्रेटिक ले लीजिए fx x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 10th में आपने ग्राफ देखा होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोलिक। इसका अगर ग्राफ आप देखोगे तो क्या आएगा, पैराबोला की फॉर्म। और if we are taking cubic polynomial, so its graph will be intersecting x axis at 2 times। ये आपने 10th में डिफरेंट ग्राफ पढ़े होंगे लाइक। so depending upon the particular polynomial function we can also draw the graph, but here you can say the domain and range are real, clear। so now we have take example and then we draw the graph of the polynomial function for particular cases। see here, example 13 say define the function f 13 define the function r from r to r real to real by y equal to fx is equal to x square। quadratic is given। question says complete the table given below by using this definition। what is the domain range of this function? also draw the graph of f। तो आपको एक टेबल देगा कि x और y। so we have to complete this table। values are given x equal to -4, ये y equal to x square। x -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 1 2 3 and 4। so you know how to solve this type of a problem। for this we put the value of x and we get corresponding value of y, that is square। जैसे -4 का स्क्वायर 16 -3 9 -2 square 4 -1 0 1 4 9 and 16। now if you want to draw the graph of this function, see here, this is x y। so x is -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
So now see what is the values are given, minus 4 and 16. So x equal to minus 4, y is 16. Suppose this is point. Similarly, x minus 3, y 9. X minus 8, y is 9. This is point. X minus 2, y 4. X minus 2, y 4. X minus 1, y 1. X 0, y. So now you join these 2 points, all these 3 points. We get a curve like this. Similarly, on positive side, x1, y1, x2, y4, x3, y9, x4, y16. So this is also graph like this. So we get the graph of this formula or the y equal to x square with this. Now domain of f. अब domain क्या है? Domain is the value of x. That is x belongs to R. Means domain is a real number. Similarly, we can say the range of f. अब range क्या है? Range of f. That is x square, and f is square of this. Okay? So that is also real number. So we can say x belongs to R. So range is also real number. Domain and range both are real number. So in this example, you have to draw the graph. You have to write this. Clear? So this is all about the class. Thanks for watching. Have a nice day.